राइट साइड वाला वो दो आ रहा है ना लंबा वाला, हाँ उसकी मिडल पोर्शन देखो, एक हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है ना, उसकी लेफ्ट साइड पे थोड़ा ऊपर से, और अभी लेफ्ट साइड पे थोड़ा वो दो, ये तो रेड ब्रेस्टेड है ना, और आपको बोला रेड ब्रेस्टेड है, इसका रेड ब्रेस्टेड का कॉल है। थोड़े थोड़े आ थोड़े रेड ब्रेस्टेड आ रही है। खुरुमजरी हुजिक इलिट टीवी की स्पेशल टॉक मियंग ताबीबा पुनमकपु तराउन उपगल लोइनना हुजिक आइना उनगदरिबा म्यूएसी अखोगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अमनी माना मणिपुर दा लागा करम करम्बा सा उचेक कापदगे अमदी माना सिगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की ओबा अखोगी लंबी असिदा कमाइन तौर चंगलखिबनो अदु मा हाक असि हुजिक करी तौदे अमदी कना ओइबगे हाइबदु मयाम पुना मियंग तामिनदुना दादा ये आप मतलब आपका इंट्रोडक्शन और ये आप क्या प्रोफेशन करता है और अभी मतलब ये वाइल्ड लाइफ के लाइन पे कैसा आया आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठौर है। मैं
राजस्थान से हूँ। राजस्थान में पोखरण मेरा गांव है। वाइल्ड लाइफ और ये हर इंसान नेचर से, वाइल्ड लाइफ से बचपन से रिलेटेड रहता है। हमारा क्योंकि डेजर्ट वाले एरियाज थे, वहाँ पे मौसम, बारिश, उस सब पे बहुत वाइल्ड लाइफ से मतलब आप कनेक्टेड रहते हो। और मेरे पेरेंट्स, पिताजी भी, उनका बहुत शौक था, तो एक अर्ली स्टेज पे ही बेसिक बर्ड्स का आइडिंग, जैसे ये ड्रोंगो है, ये मैना है, ये कोयल है, ये लाख है, उतना यंग डेज में आइडिंग का मतलब बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, पेड़ों के बारे में पता पड़ गया था। और फिर स्कूलिंग भी मेरा माउंट आबू में हुआ था, इनिशियल स्कूलिंग, तो वहाँ पे एकदम अलग वातावरण था। एक तो डेजर्ट का वातावरण, एक पहाड़ का वातावरण, तो उससे दोनों में कैसे वहाँ पे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके का मौसम, अलग तरीके के पक्षी, अलग तरीके के जानवर, उस तरीके से करते 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 फिर कभी ज़्यादा टाइम दे पाते थे, कभी कम टाइम, बट ओवरऑल इसमें चलते रहे फ्रॉम अ अर्ली स्टेज। तो सर ये आपका मतलब अभी ये वाइल्ड लाइफ से आने से पहले आप क्या काम करते थे, और ये मतलब क्या चीज़ देखने की वजह से जो काम पहले किया था, और ये क्या चीज़ देने की वजह से वाइल्ड लाइफ के लाइन पे आए? देखिए, वाइल्ड लाइफ मेरा वैसे लाइन नहीं है, ये एक शौक है, एक हॉबी है। और अंग्रेज लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पुटअप करते हैं, वो जेंटलमैन नेचुरलिस्ट बोलते हैं। तो आप मेरे को फिर भी उस तरीके की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शौकिया ये चीज़ करता हूँ। और काफ़ी सालों से जब मैं ये चीज़ को एंजॉय करता था, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाऊं। तो मेरे एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी अब 25 साल की हो गई है, बेटा अब 21 साल का हो गया है। तो उनको भी मैंने पूरा हर छुट्टी में अलग अलग नेशनल पार्क्स में ले जाते थे, अलग अलग बायोस्फीयर्स में ले जाके उनको दिखाते थे। अब वो बड़े हो गए हैं, वो अपने लाइन पे हो गए हैं, और मैं अब थोड़ा सा फ्री हूँ। तो और जहाँ तक आपने पूछा कि मतलब मेरा पहले बैक, क्या, हाँ, हाँ, पहले तो क्या मैंने जॉब? 8 साल नौकरी करी थी। हाँ। नौकरी करके फिर मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। काफ़ी सालों तक बिजनेस चलाया। फिर एक स्टेज पे आके मेरे को लगा कि बहुत हो गया, अब मेरे पास उतना है कि मेरा काम मज़े से चल सकता है। हाँ। और अब मैं सेमी रिटायर्ड, आप समझ सकते हैं कि लाइफ जीता हूँ। हाँ। थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बट मोस्टली मेरे शौक के हिसाब से ट्रैवल करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, हाँ। और नेचर के बारे में पढ़ाई करता हूँ। हाँ। तो सर ये आपने जो अभी ये चिड़िया के बारे में, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में जो बताया था, तो अभी आप मणिपुर में मतलब क्या सोच के, क्या होप और क्या एक्सपेक्ट करके, क्या चीज़ मिलेगा, मतलब ये क्या 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 सोच के इधर आया है? देखिए, मैं ये जो इस साल मैंने ये पूरा साल डिसाइड किया था कि मैं ट्रैवल करूँगा, हिंदुस्तान को चिड़ियाओं के थ्रू देखूँगा। हिंदुस्तान के जो पक्षी हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांत पे, अलग अलग वातावरण में अलग अलग पक्षी होते हैं। तो उस हिसाब से जनवरी से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने ये 3 चक्कर हिंदुस्तान के लगा दिए हैं, और दिसंबर में मैं चौथा राउंड लगाऊंगा। लेकिन मणिपुर एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल ही छोटा सा स्टेट है, लेकिन 550 से ज़्यादा स्पीशीज बर्ड्स की यहाँ पे मिलती है। और बहुत सी बर्ड्स ऐसी हैं कि जो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती, आपको मणिपुर में आके करना पड़ेगा। जैसे येलो थ्रोटेड लाफिंग थ्रश हुआ, तो आस नागालैंड वगैरह में भी चांसेस रहते हैं, बट यहीं पे शॉर्ट साइटिंग है। मिसेस ह्यूम्स फेजेंट जो आपका स्टेट बर्ड है, मिजोरम का भी स्टेट बर्ड है, बट मिजोरम में वो दिखता नहीं है, वो आपको मणिपुर में आके ही देखना पड़ेगा। चेस्टनट बंटिंग हुआ, मुस्टैश लाफिंग थ्रश हुआ, स्लेंडर बिल्ड ओरियल हुआ, आपका जेडन्स बुश चैट, तो ये सब
बर्मी श्राइक, और थोड़ा सा अगर आप इंटीरियर्स में और जाओ तो चाइनीज फ्रैंकलिन, येलो बेलीड फ्लापेकर, ये सब पक्षी मैंने 3 चक्कर हिंदुस्तान के लगाए हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिल पाए। बहुत बार तो क्या होता है कि आप कुछ सीजन में हर जगह रह नहीं सकते, तो जैसे येलो बेलीड फ्लापेकर है, मेरे को बंगाल में कर लेना था, बट उस समय मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा था। वो सब पक्षी यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे मुझे आना ही था। और जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मार्च अप्रैल के बाद में यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आया नहीं, तो ये पक्षी देखने मुझे मणिपुर आना ही था। पिछले 1.5 दिन में जैसे हमने स्लेंडर बिल्ड ओरियल स्पॉटिंग किया, आज सवेरे जेडन्स बुश चैट साइटिंग हुई, शाम को बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा फ्लॉक येलो थ्रोटेड लाफिंग थ्रशेस का दिखा। तो ऐसे ही मिसेस ह्यूम्स फेजेंट हुआ, चाइनीज फ्रैंकलिन हुआ, आपका चेस्टनट बंटिंग हुआ, बर्मी श्राइक, ग्रे हेडेड पैराकीट, बेयर्स पोचर्ड, इन ईस्टर्न मार्श हैरियर, इन सब की साइटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्लान ये था कि कल निकलूं, लेकिन क्योंकि साइटिंग नहीं हुई और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वातावरण उस तरीके का है कि आप हाईलैंड्स में नहीं जा सकते, आपको वैली में ही बर्डिंग करना है, बहुत से एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सावधानी से आपको बर्डिंग करनी पड़ रही है, ना कि मतलब एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह आप नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के साथ घुल मिल कर लोकल बनकर बर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो एक बाधा पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी जो आदमी बिगियर करेगा इंडिया के लिए, उसको मणिपुर तो आना ही पड़ेगा। तो सर ये जो बिग ईयर आपने जो अभी बोला है उसके बारे में क्या है, और मतलब किस चीज़ें का है वो थोड़ा बता दीजिए। ये बर्ड वॉचिंग के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेवलप हुआ था। कोई विदेशी महिला, उनको उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको 2-3 महीने कि आपकी लाइफ बाकी है। तो उनके दोस्तों ने उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे के उनको कहा कि आप नेचर में आओ, आप थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग करो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चिड़िया देखूंगी, और पूरा साल उन्होंने बर्डिंग करी। और उनकी जो कैंसर था, जो कि डॉक्टर कह रहे थे कि उनका कुछ क्षण महीनों में देहांत हो जाना था, लेकिन वो उसके बाद 11 साल जी, और 11 साल के बाद में भी उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। तो उनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। बट इंडिया के अंदर एक बैंगलोर के रहवासी हैं गुरुराज मोर्चिंग, उन्होंने बहुत ही सुंदर बिगेयर किया था। उनका भी थोड़ा सा सिचुएशन वैसे ही था कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, उनके हिप कैंसर था और उनको डॉक्टर ने बहुत कम टाइम दिया था। लेकिन आज भी ऊपर वाले की दया से कि वो स्वस्थ हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं। मेरे कुछ महीने पहले ही उनसे बात हुई थी और उन्होंने 1 साल के अंदर 951 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को फोटोग्राफ किया था। मतलब हाँ, इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे मतलब पूरा इंडिया का हर मतलब स्टेट जाके। हाँ, हर स्टेट जाकर। उनको जबकि रिस्ट्रिक्शन था कि वो लद्दाख और वहाँ पे नहीं जा सकते उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो अंडमान निकोबार गए, केरला गए, यहाँ पे भी आए, सब जगह करके। और दूसरा बहुत अच्छा बिगियर किया था शशांक दालवी ने, जो कि एक रिसर्चर और वो स्टडी करते हैं बर्ड्स को। तो उन्होंने किया था, उन्होंने सन 2015 में 1 साल के अंदर 1128 स्पीशीज इंडिया में बर्ड्स आइडेंटिफाई करी थी। इंडिया में जैसे आपको और आपके श्रोता को मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि 1361 स्पीशीज हैं बर्ड्स की जो इंडिया में पाई जाती हैं या पाई जाती थी भी। जैसे बहुत सी बर्ड्स, पिंक हेडेड डक है, साइबेरियन क्रेन है, आपका मणिपुर क्वेल है, हिमालयन क्वेल है जो एक्सटिंक्ट हो गई, बट वो भी उस लिस्ट में काउंट होती है। तो उसके वजह से ये बिग ईयर मतलब हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किया जाता है कि फोटोग्राफर, आप फोटोग्राफर के हिसाब से सिर्फ मत सोचें आप। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने पक्षी को देख लिया अच्छी तरीके से और मैं उसको आईडी कर सकता हूँ, 2-3 चीजें मैं पहचान सकता हूँ उस पक्षी को, उसको
काउंट कर सकते हैं। कुछ लोग फोटो में बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पक्षी का कॉल भी सुन लिया तो भी चलता है। तो लेकिन मैंने जो है ये साल 2023 पूरा डेडिकेट किया है टू वॉचिंग बर्ड्स, and through birds seeing the country, meeting people, making new friends and becoming a better person। मतलब अपने आप को नॉलेज में हर तरीके से आप एक अलग स्टेज पे पाते हो। So like after you have come to Manipur for big year, so what you expect before and what you have right now in Manipur, is it really satisfied up to your level or is it still a way to go? I am very happy because of the way the locals are helping me, and they just it is just मतलब it's beyond words how the locals are going out of the way to just show me the birds despite the restriction. If things been more peaceful and settled, I would have been able to travel more freely, and I would have been able to see more birds, which I know now that I've dropped the idea of trying for Mrs. Hume's pheasant, Chinese francolin, even chestnut bunting, uh, grey-eyed bulbul, which otherwise are very easily photographable, seeable, if that access to those areas which have become red zones, so to say, had that been open, वो बहुत आसानी से मैं कर सकता था वो सब बर्ड्स को। बट सब ने सजेस्ट किया कि वो मतलब नहीं है अभी। And like there's also a saying like for those wildlife photographers, like they face a lot of difficulties, a lot of hardship, and even they have a lot of patience. So regarding that, like you have any suggestions or any comment to that? As you said, patience. So nothing beats patience and hard work. And with exposure, the time exposure to any field, may it be bird watching, may it be animal watching, may it be photography, or may it be just gathering knowledge, doing some sport, it is the hard work, the patience, the due diligence which will get you home. So you just have to stick to what interests you, and I'm sure you'll grow. And like for as you had mentioned before, for big year, like you have been traveling in this every states and every parts of India. So like what are the hardships that you have seen by you, like for yourself? See, it's you consider it hard if you are not enjoying it, Okay. but it's for somebody else. Like a lot of my friends have joined me off and on in between. Uh, it gets they burn out after like 1 week of birding is fun, 10 days is fun, 15 days. Most people they say that waking up at 3:30 for every day, walking 18-20 kilometers, in cold weather, in wet weather. So I've been at -17, I've been at plus 48 degrees, cold, hot, in places where there was non-stop rain. But you have to that's that patience bit which keeps you going, and that's why I have been able to see 1100 plus birds this year. Okay. Until now, to which state you have traveled? It's like how many states that you have traveled till now? So I'll start from the furthest. I've traveled twice to Andaman and Nicobar. I have traveled twice to Kerala. I have traveled to Maharashtra, to Tamil Nadu, thrice to Gujarat. I'm from Rajasthan, so there, of course. Then a bit of Haryana, a bit of Uttar Pradesh, uh, thrice to West Bengal,
This was my third trip to Assam, Arunachal. I've done Nagaland once. I've done Meghalaya once. I'm just coming in from Mizoram. So Mizoram, Manipur. I've traveled to Ladakh. I've done Kashmir twice. Himachal, Uttarakhand. So most of the states which like you'll notice that I've not done Madhya Pradesh and Bihar and Jharkhand and the central areas where you just get common birds. But northeast, northwest, you can just divide it into, the western Himalayas, the eastern Himalayas, the central Indian plains, the desert of Rajasthan, Gujarat, Kerala, and the southern western Ghats, and Andaman and Nicobar. So if you just, divide these areas, then you can just, cherry pick your birds. Northeast India is like one of the biodiversity hotspots of the world. So is southern Western Ghats, Kerala, and up to Goa, Sri Lanka. That belt is also a biodiversity hotspot. And a biodiversity hotspot is something like where you have a lot of species which are found only there. The number of species are very high. Species unique to that area, may it be trees, may it be insects, may it be butterflies, birds, animals. So they're unique to that area. And then as for like big year, still there are few days left. Right. So like during these days, like what we have hope, and like are you still going to travel to other place and other states in search of this birds and Right, yeah. right. So now, there's not much left in the well. The well is drying up. Yeah. So I have to still, like from here, I'll go to West Bengal. There are 2-3 birds that I have to do there. I have to do Uttarakhand. There are 4-5 birds there. I have to do Ladakh, Kashmir, that area. I'm just dividing them into areas. Punjab, Haryana, couple of days there. Rajasthan, Gujarat, I think around 5 days. I'm trying to do one bird in Andamans. Let's see if it works out. Then I might have to go there for 4 days. Kerala, Tamil Nadu, I've got 3 birds, so I'll try for that also. And let's see. So basically in December, like the days are yeah, not that much also. 30 days. Still, it's like it will be very hard to travel Yeah. all those area in remaining days. Right. So it's going to be non-stop. Non-stop. I left home, like I've done 2 40-day trips this year. I've been traveling most of the time, but on this trip, I left home on 28th October and I'm traveling and I'm most probably, I don't know, if I go home for a day or so, that'll also very unlikely, but maybe for the birds in Rajasthan, I might meet my family, but otherwise it's going to be non-stop travel. And uh, in this generation, like or in this time, or as we can say, like a lot of students they are pursuing like wildlife, and even from this biology or geology students, they have come to this wildlife line or wildlife professions and all. Like do you have any suggestion to those youngsters, like who is trying to involve in wildlife, like conservation or management, or the way sir is doing right now? So is there any suggestion that you want to give to the young? See, wildlife, it's a very personal and passionate kind of a pursuit. It's not something that somebody says कि मेरे को पैसा बनाना है. You have to study for a very long time. Even for a decent bird watcher, for a bird watcher to be called a decent bird watcher, it takes at least, I think, 10 years of seasoning. So when people get into research, it's a very hard line, but most people who get into wildlife research and conservation, they do it out of passion. And it's unfortunate that people don't pay as much for people who are pursuing these fields in comparison to, say, somebody who was making a software. The amount of hard work that a wildlifer puts in, it's not a comparison, but it's really hard work. But coming to conservation, coming to wildlife, I'm sure the situation, the state of the world, it's gonna be a very lucrative career. So youngsters should take it up, not just research, but also wildlife tourism, becoming naturalists, getting into conservation. They're all linked. They're all parts of that same basket. And like as we have mentioned before, like when you came to Manipur, after seeing the situations, like the situations in Manipur, it's more than 5 months. And as you have mentioned before, that traveling in hilly areas in Delhi,
like it will be difficult for local people and also like to travel with you. So like, do you have any suggestions regarding the situation right now? See, I am not really the best man to answer this, but as a tourist, Mm. as a person who has to travel into the interiors of every state to see the birds, it's important that somebody steps up on all the sides. You come to a logical conclusion and Mm. move on in life. It can't be just your way or his way or my way. There has to be a right way of doing things, and it's high time. In today's day and age, you can't just come to a solution out of violence and out of hatred. And so like after you reach Imphal and staying in like nearby Kaibulam Jao, like how many birds have you counted, and like is it what you have hoped for, or are you still like going to continue tomorrow? Yeah, so for me, like, having crisscrossed the country thrice, Mm. the number of birds are very few. So if I had come as a normal bird watcher, trying to prepare a checklist of Manipur, Mm. I would have done many more birds. Mm. But I've got a specific target, which is like, target is a very bad word Mm. in this sense, because a lot of people stop seeing the rest of the birds. But I'm preparing a state checklist Okay. also, and seeing the birds which I have to focus on. So like, Mm. for uh, the Oriole yesterday, Mm. we spent the entire evening looking for the Oriole. For the Jayden's bush chat this morning, Mm. we spent like most part of the day Mm. looking for that bird. Mm. So it's very difficult for somebody to, you know, compare the two. I have Mm. got specific targets. I have done 3 birds out of the 10, 12 birds Mm. that I had. I know that there is one area which I can't go, Mm. but still I feel that I should be able to, or I'm going to try tomorrow and Mm. half of the day after, Mm. before like catching my flight. I'm going to try for uh, the Burmese shrike. I'm going to try for the gray-headed parakeet. I'm going to try for the Bayes pochard, the Mm. eastern marsh harrier, and I'd be lucky if I get some other bird. Okay. And lastly, like what I want to know is uh, like you must have heard a lot of things about Manipur, like culture, traditions, like food, everything. So after you reach here, like what are the things that you like or dislike? I love the warmth of the people. Okay. The food is amazing. Okay. The landscapes are beautiful. Uh, Everything's really nice. I'm just like, it's unfortunate that mm. I couldn't roam more freely and see Manipur the way it is. I Okay. I know. I was speaking to my daughter, and she Mm. said, "Please go and uh, watch a Manipuri dance performance." But Okay. it's like, those things you can't touch on. You go to a state, it's Mm. not just talking about conservation, but it's about the culture, the cuisine, Mm. uh, and these conversations that we have. Mm. So all those things, when they link up, Mm. then it really becomes a great holiday. Mm. And like, do you want to say anything to the people of Manipur about the wildlife and to those youngsters about wildlife? Like, lastly, as a comment, as See, a I've done it. I've taught my children mm. uh, as much as I could Mm. about nature, and I think now that they are grown up, Mm. this this pursuit of a big year, it's like also teaching youngsters. Mm. See, I'm 55, Okay. uh, and that life has to be lived, Mm. and life has to be lived properly. So Mm. you have to have hobbies. You can take it up as a profession, Mm. but it's not possible that 100% of people all get into conservation, all become naturalists, but you can always have it as a great hobby. Mm. And it's the best thing to step out of your home, Mm. step into the elements and learn.
And this is one place where any person will get lost in forgetting the problems of the day. You just get lost in observing the beauty of nature and what God has given us. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯐꯪꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯀꯥꯞꯀꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯧꯍꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯛ ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯀꯨꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯎꯆꯦꯛꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯎꯆꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯈꯛ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯊꯕ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯗꯤꯒꯕꯤꯖय ꯁꯤꯡꯀꯣ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ खुरुमजꯔꯤ सर आप कौन कौन से बर्ड अभी देखे हैं अभी Burmese shrike, yellow-throated laughing thrushes, और बाकी कॉमन white-throated kingfisher, कुछ ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन्स, बट मेन जो यहाँ के टारगेट्स थे उसमें 2 अच्छे मिल गए।